Hello, everyone, and welcome back to Quantifiers. Today's passage that we'll be reading is coming from the domain of developmental psychology. You will find some elements related to epistemology. Epistemology is a study of certain philosophical propositions, or you can say it is the branch of philosophy, which is basically talking about the human origin and the limits of human knowledge. So, this particular passage is going to have a little bit of elements related to psychology. You can say some areas of cognitive psychology or probably developmental psychology. A very decent passage to understand. And at the same time, this passage is heavily relying on examples that are given by the author and as to how those examples are basically related to a couple of concepts. Let us get down to reading what the passage is all about. Research indicates that a speaker attributes affect children's selective trust. These include perceived speaker's age, moral characteristics, familiarity, previous accuracy, and expertise. Listeners use information about how a statement is made to judge the veracity of the statement. What do we mean by veracity? Veracity means when you're talking about the accuracy of something. VER as a word root itself means when you're talking about the verity ho gaya, verifiable ho gaya, basically something that is accurate, something that is authentic. Listeners use information about how a statement is made to judge the veracity of a statement. Speaking circuitously, circuitous का मतलब क्या होता है? गोल गोल बातें करना होता है in order to confuse या meandering talks जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा गोल गोल बातें करना. Speaking circuitously, for example, can signal deceptive intent. In addition to circuitous speech, non-verbal leakage may also indicate deceptive behavior. Thus, listeners may be able to detect manipulative communication by attending to their non-verbal leakage. Non-verbal का मतलब क्या होता है? When you're talking about gestures, when you're talking about movement, you're talking about some expressions. The role of non-verbal behavior in children's epistemic vigilance towards possible deception has received limited attention. One study appears to show that children's understanding of the relevance of verbal facial inconsistency is late developing. However, this conclusion may have affected by methodological peculiarities of the study. So here, what are we talking about? We start by talking about in the beginning as to how children, when you talk about children, they get affected by the attributes of the speaker. So basically, they get affected by the speaker's age, his or her moral characteristics, familiarity, accuracy, etc. At the same time, we are talking about the fact that whenever an individual is doing any sort of a circuitous talk, दैट मीन्स हम लोग ये अज्यूम करना शुरू कर ही देते हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान का बिहेवियर जो है डिसेप्टिव है या मैनिपुलेटिव इंटेंट है. एंड देन वी आर समवेयर बीइंग टोल्ड अबाउट द चिल्ड्रन as to the understanding of children when it comes to the verbal facial inconsistency is something that is late developing. लेकिन इस चीज को भी ज्यादा हम टेस्टिफाई नहीं कर पाए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपकी मेथोडोलॉजिकल पेक्युलरिटीज आ जाती हैं. इन देयर स्टडी, preschool, second, and fourth grade students heard an adult declare either a positive, neutral, or negative statement coupled with either a positive, neutral, or negative facial expression. The participants were asked to judge whether the speakers were lying, telling the truth, or unsure. Results show that preschoolers performed poorly and did not use inconsistency as a cue to lying. So basically, let us say that there are preschoolers are there and a second grade and a fourth grade student is there. So अब बोला क्या है आपने, वो तीन अलग अलग क्लास के जो बच्चे हैं, तीन अलग अलग लेवल्स ऑफ स्कूलिंग के जो बच्चे हैं, आपने उनको बोला है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू convey that I am feeling very sad, but the element of joy is very much visible on my face. Or when I'm saying that I am very, very happy today, but when I'm talking to you, my tone is something that's very sad. So, of course, there is an inconsistency in my verbal expression and in my facial expression, right? But एक preschooler जो है इस चीज को judge नहीं कर पाया. This ability increased with age, such as the second and the fourth graders attributed truth more often to consistent speakers
than to inconsistent speakers. So probably when you're talking about kids who grow to senior classes, they probably have the ability to figure out as to who is consistent, who is not consistent. These results are open to interpretation. Although they seem to suggest that young children fail to use inconsistency as a cue means hint, the procedure used in the study required that children verbally accuse an adult of lying, something the younger children might have been hesitant to do. To address this, it would be advisable to use a behavioral, non-confrontational method of asserting children's trust in the speaker. So basically, we can assume that जो आपका second and fourth grader था, उसने बोल दिया that these people were lying because their facial expression and their verbal tone. Probably there was a mismatch. बट जो छोटा बच्चा है वो नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई एक बिहेवियरल एंड नॉन कन्फ्रंटेशनल मेथड, यानी कि बिना कन्फ्रंट किए किसी को, बिना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट किए अगर वैसा मेथड रखें, तो शायद बच्चे जो हैं दे शुड बी और दे वुड बी एबल टू असेस their trust in the speaker. Similarity of the published studies have examined children's ability to use cues to infer that someone might be lying to them. Most do not investigate children's spontaneous use of epistemic vigilance. Epistemic vigilance होती है जब आपका दिमाग जो है बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है कि ट्रुथ क्या है एंड डिसेप्शन क्या है, against misleading informants. Indeed, most existing studies explicitly label or highlight the informant's intention to deceive or to be tricky. Other studies in this area present evidence of children's ability to protect against the deceptive information after multiple exposures with the same speaker, which gives children a chance to learn over time that a particular informant has a history of deception. So when I know that I'm a child and I know that a particular person has a history of deception, every time when I meet him or her, he or she is going to deceive me, cheat me, say things that are not true. So I would probably eventually, what am I going to do? Because I've had multiple exposures with the same speaker. Eventually, I'm going to learn that this person has the habit of lying. Such studies contribute to our understanding of how young children can come to practice epistemic vigilance. That is, again, when you are very watchful and alert against bad sources of information, but do not offer evidence of how children may engage in this important process spontaneously and without the help of explicit labeling or multi-trial learning. Very important point here. We are being told कि ये studies हमें ये तो बता रही हैं कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनको epistemic vigilance यानी कि अपने दिमाग से जज करना है whether कोई information is correct or it is incorrect, and जज करना है whether the person is lying or is honest, right? बट ये बताया नहीं है कि ये प्रोसेस आपने करना कैसे है, राइट? एंड आपको इस प्रोसेस को करने के लिए जरूरी नहीं है कि मल्टीपल एक्सपोजर हो एक पर्टिकुलर स्पीकर के साथ. सो वी हैव नॉट बीन टोल्ड अबाउट दैट. हर एक स्टडी यही चीज बोल रही है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट कैसे करना चाहिए वो नहीं बताया है. The last few decades of research have made it clear that all children are equipped with mechanisms that guide whom they trust and from whom they prefer to learn. Nevertheless, here remains a large gap in our knowledge about how children protect themselves against potentially deceptive speakers. When these defense mechanisms develop, what cues are they based on? How successful they are. So this particular point is also elaborating something that has been stated in the previous paragraph. Umpteen researches for decades have been there which are saying that children should be equipped with the mechanism, which mechanism probably the epistemic vigilance. लेकिन करना कैसे है, उनको कैसे डेवलप करना है, उनको कौन से क्यूज जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कौन से हिंट्स उनको पता होने चाहिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल है कितनी नहीं है वो कुछ नहीं बताया है, सिर्फ प्रोपगेट किया गया है स्टडीज में कि ऐसा होना चाहिए. सो बेसिकली द पैसेज इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड लाइज, deception, manipulation of information, and somewhere advocating that kids should use their epistemic vigilance. But how? That has not been told. So the passage was not as such very difficult to understand. There was only one technical term that had been used here. First is veracity, and the other is when you're talking about some sort of an epistemic vigilance. Now coming to the questions of the passage. Research indicates all of the following can be inferred from the passage except. Now अब फिर से inference question है, यानी कि logically हम किस चीज को deduce कर सकते हैं, किस चीज को हम deduce नहीं कर सकते, right? Coming to question number 1, तो अभी इसमें हम लोगों को again inference निकालना है. All of the following can be inferred except. Non-verbal cues are important indicators of deceptive intent in speakers. बहुत जरूरी है ये.
तो ये तो एक्सेप्ट वाला नहीं हो सकता, ये तो क्लियरली पैसेज में मेंशन्ड है. Young children lack the ability to protect themselves against deceptive information. हो सकता है that they lack the ability, right? एक बारी रख लेते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को. Our knowledge of how and when children develop epistemic vigilance against misinformation is limited. Absolutely limited. We have been doing a couple of researches, but वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो हमने कुछ भी नहीं बताया है. तो ये भी इन्फर हम कर सकते हैं. Older children are more likely to report verbal facial inconsistency than preschoolers. ये भी हम इन्फर कर सकते हैं. Now coming to question option number 2, young children lack the ability to protect themselves against deceptive information. अब पैसेज में हम लोगों को क्या बताया गया है कि जितने भी बच्चे हैं, राइट, हम लोगों को एक स्टडी ने क्या बताया था, दैट ऑल किड्स आर इक्विप्ड विद दिस पर्टिकुलर एबिलिटी, कि वो जज कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हम लोगों को झूठ बोल रहे हैं, राइट. तो अगर स्टडीज ये प्रूव कर रही हैं कि बच्चों के पास ये एबिलिटी है, that guide trust and from whom they prefer to learn. It was, I think, somewhere stated in the second paragraph. Um, Somewhere here. Uh, yeah. Where we are talking about how the kids are unable to use their epistemic vigilance. Okay. Let me see where it is mentioned. Yeah. So if we come to the last line of the last paragraph, first line of the last paragraph, the last few decades of research have made it clear that all children are equipped with the mechanism that guide whom they trust and from whom they prefer to learn. Nevertheless, here remains a large gap in our knowledge. तो बच्चों के पास तो हर किसी के पास ये पावर है. तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि they lack the ability to protect themselves. They have the ability, but they do not know how they are supposed to use that. So the correct answer for question number 1 is going to be option number 2. Coming to the next question, all of the following would be consistent behavior according to the passage except. अब कंसिस्टेंट बिहेवियर का मतलब क्या है, उसने इनकंसिस्टेंसी का क्या बताया था, या कंसिस्टेंसी का उसने क्या बताया था कि जो बंदा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो हर बारी झूठ बोलेगा ही बोलेगा, तो आप उसकी कंसिस्टेंसी में आके आपको पता चल ही जाएगा कि ये इंसान जो है, he or she has the habit of lying because they have a repetitive deceptive information और repetitive deceptive behavior, जिसके मल्टीपल एक्सपोजर जब मिलते हैं एक बच्चे को, तो उन्हें पता चल जाता है कि इस इंफॉर्मेंट की हिस्ट्री ऑफ डिसेप्शन है, राइट. अब उसी तरह अगर हम कंसिस्टेंट बिहेवियर के बारे में बात करें, चाहे वो पॉजिटिव वे में कंसिस्टेंट बिहेवियर हो, चाहे वो नेगेटिव वे में कंसिस्टेंट बिहेवियर हो, क्योंकि हम पैसेज में इनकंसिस्टेंसी की बात तो कर ही रहे हैं. All of the following would be consistent behavior according to the passage except a man while shopping for a car in a showroom nodded while mentioning that he fancied a particular car. आपने क्या किया है, नॉड किया है. सो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे अगर हम बोलें कि कंसिस्टेंट अगर वर्बल बिहेवियर बोलें, या अगर हम कहीं ना कहीं इसको एक कंसिस्टेंट नॉन वर्बल बिहेवियर बोलें, राइट, तो वर्बल फेशियल कंसिस्टेंसी हमारी क्या होगी, आपने नॉड किया, तो इसका मतलब ये तो आपका एक्सेप्ट नहीं हो सकता. अ कॉलेज फ्रेशमैन श्रग्ड हिज शोल्डर्स, अगेन ये किस तरह का बिहेवियर है, ये सारे अगर देखे जाए तो ये हमारे नॉन वर्बल कंसिस्टेंट बिहेवियर है, राइट. So a college freshman shrugged his shoulders when told to watch a documentary that might help his understanding of a challenging subject. So when you're shrugging your shoulders, किस तरह का response दे रहे? A response that is very negative. A saleswoman complimented a potential customer who was trying out an outfit without noticing that the dress was oversized. यहाँ पे आपने compliment किया without even noticing that the dress was outsized, right? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, consistent behavior तो नहीं हो सकता. It is not a very verbal and a consistent behavior. A battalion of soldiers letting out a war cry and charging at the enemy. So war cry जो है ये भी आपका एक repetitive and consistent behavior होगा, right? So the correct answer here is going to be option number 3. And why?
अब जब हमने कंसिस्टेंट बिहेवियर के बारे में बात किया है, इसमें हमने क्या बोला है कि मेरा जो बोलने का एक तरीका है या वट एवर आई एम ट्राइंग टू स्पीक, उसका इंटेंट और जो मेरे वर्बल, नॉन वर्बल एंड एक्सटर्नल क्यूज होंगे वो मैच करेंगे। तो यहां पे मेरा नॉन वर्बल क्यू क्या है? मैंने नॉड किया, राइट, वाइल मेंशनिंग दैट ही फैंसीड अ पर्टिकुलर कार। तो ये मेरा एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल है। फ्रेशमैन ने श्रग किया अपने शोल्डर्स को, ये उसका एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल है। सेल्स वुमन ने कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव है। ड्रेस जो है वो आउटसाइज्ड है, तो इसका मतलब उसने जो भी कॉम्प्लीमेंट किया वो उसको भी पता है वो झूठ बोल रही थी। बाकी हम लोगों को क्या बताया गया है? कंसिस्टेंट बिहेवियर का पैसेज में क्या बताया कि अलाइनमेंट किस चीज की होती है? स्पीकर की इंटेंट और जो वो कम्युनिकेट कर रहा है उसकी। और इनकंसिस्टेंसी किसकी है? चाहे वो अब आपके झूठ बोलने के चक्कर में हो, चाहे वो आपके सच बोलने के चक्कर में, राइट? कंसिस्टेंसी उस वे में हमने बात किया है। A battalion of soldiers letting out a war cry and charging at the enemy. So they let out a war cry every time. तो इसका मतलब क्या है? आपका इंटेंट है वॉर में एंगेज करने का. So the only answer that does not match here is going to be option number 3. Epistemic vigilance in the context of the passage may mean all of the following except. So when we discussed it, I told you specifically epistemic vigilance का मतलब क्या होता है? अपने दिमाग को इतना तेज करना कि आप रियल एंड डिसेप्शन के बीच में सेग्रीगेट कर पा रहे, राइट? सो यहां पे क्या मतलब है इसका? सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज में मीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर दैट अलाउज स्पीकर्स टू इन्फ्लुएंस लिसनर्स। हो सकता है ये कि नहीं हो सकता? अब अगर हम इस चीज को देखें, एपिस्टेमिक विजिलेंस का मतलब क्या होता है? इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वेयर बाय अ लिसनर which is used by the listener. Now, what am I going to do? It is being used by the listener. So I, as a listener, decide to filter out all the bad information. And I've decided that I'm not going to get manipulated. So I'm using my mind and I am not buying your lies, your misinformation, or your deceit. Right? अब ए में क्या बोल रहे हैं? Recognizing behavior that allows speakers to influence the listeners. अगर लिसनर स्पीकर की बातों में इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो अपना दिमाग थोड़ी ना इस्तेमाल कर रहा है. So correct answer is going to be option number 1. Let us look at the other answer choices. Protecting oneself from forming false beliefs based on what others say. If you're protecting yourself, that means you're using your cognition. आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. Taking a critical stance towards the information we receive. अगर मैं एक critical stand ले रही हूँ towards the information that I've received, इसका मतलब I'm using my mind. If I'm using my mind तो accept नहीं हो सकता. Paying special attention to cues that suggest deception or misinformation. तो यहाँ पे भी मैं अपनी power of epistemic vigilance का इस्तेमाल कर रही हूँ, where I'm using my mind to filter out what information is correct, what is not correct. Here I have recognized the behavior, but I'm allowing to get influenced by the speaker, right? So the speaker knows what kind of a behavior the listener has, and then the speaker is trying to manipulate the listener. अगर listener influence हो रहा है, manipulate हो रहा है, तो इसका मतलब जो है listener अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा. So the correct answer is option number 1. According to the author, published studies examining children's selective trust does not include. अब ये भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे क्लियरली ये बोला था, आपने ये तो बता दिया कि ये फॉलो करो. कैसे करो, कब करो? लास्ट पैराग्राफ में हमें बताया है ना, what these defense mechanisms are, how do they develop, what are the cues that they are based on, how successful they are. ये तो आपने कुछ भी नहीं बताया. So A says, according to the author, published studies examining children's selective trust does not include the speaker's intention to deceive. ये तो include होता है. हमें पता है हमें को डिसीव कर रहा है, हमें ये भी पता है हमें बचाव कैसे करना है, लेकिन कैसे करना है? हमें ये भी पता है हमें बचाव करना है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताया गया. चिल्ड्रंस पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिसेप्शन, ये भी बताया है, जहां पे उन्होंने आपको बोला है कि एक आपका रेपिटेटिव जो है डिसेप्टिव इंफॉर्मेशन, आपको मल्टीपल एक्सपोजर्स मिलते हैं, राइट? सो इसके बारे में भी बता रखा है. Children's ability to identify whom to trust and whom to learn from.
अब ये भी हम लोगों को बता रखा है, क्यों बता रखा है? क्योंकि ये एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टडी है, जहां पे इन्होंने बताया है कि आपके जो छोटे बच्चे हैं वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, बड़े बच्चे जो हैं उनको पता चल जाता है किससे सीख रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है, जो उसने प्री स्कूलर्स इन सेकेंड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड वाला बताया है, जहां पे उसने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया है कि जो आपके छोटे बच्चे हैं उनके, अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कराना है लोगों के झूठ को, तो आप उनको नॉन कन्फ्रंटेशनल मेथड करो, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं वो तो आराम से कोप अप कर लेते हैं, राइट? Children's untaught defense against deceptive communication. This is the correct information. You are just telling them the strategies, or you are guiding them, not guiding them, rather you are informing them कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उसको कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल करना है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं. That is what the last two paragraphs are majorly talking about. So the correct answer for question number 4 is going to be option number 4. Now, this was a typical passage which usually, whenever we talk about psychology as a field, or when we talk about certain fields where the author is using a couple of examples to bring about a particular concept, इसमें जनरली जो क्वेश्चन टाइप्स आपके होंगे वो एनालोगस होंगे. एनालोगस मतलब जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, राइट? So I hope this passage was clear to all of you, and it was an interesting passage. So I'll see you in the next session with another interesting passage. Till then, thank you and keep reading.